Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. The most important news and editorial of the day that is relevant for both prelims and mains examination perspective will be discussed in this session. Let's get started with the news topic list. Today is 13th of September. The first important news that is state may have NITI Aayog-like body suit. जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में नीति आयोग मॉनिटर करती है या सजेशंस देती है पॉलिसी को लेकर के, अब स्टेट में भी उसी तरह से नीति आयोग बनाई जाएगी, स्टेट नीति आयोग, राइट. नाउ सेकंड, इंडिया रेज कंसर्न अबाउट श्रीलंका's Tamil issues in United Nations. Third, center asks states to implement the adaptations rule. We have discussed about the adaptation rule and the changes that has been made. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो जल्दी से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें. फोर्थ, दैट इज BDS courses to be revamped with a semester-based system. Fifth, efforts on to curb lumpy skin diseases. This is what the Prime Minister has said, that India has already developed a vaccine and India is making all best possible efforts to ensure that we are basically completely removing and eliminating the lumpy skin diseases. And the last is an editorial, that is great G20 power with great responsibility, which India is about to take the chair of G20. Apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before I start this session, if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful for examination purposes, do not forget to press a like button. So starting the session with the first news of the day, that is states may have a NITI Aayog-like bodies. This particular news is important for General Studies Paper 2 under the topic Functions and Responsibility of Union and States and Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure of our country. So what is that precisely in the news? So basically to have a vision, a national vision of inclusive development, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जिस तरह से नीति आयोग है सेंट्रल लेवल पे, तो नीति आयोग बेसिकली एक हैंड होल्ड का काम करेगी जहाँ पे स्टेट्स को हेल्प किया जाएगा टू सेट अप अ सिमिलर बॉडीज रिप्लेसिंग द आउटडेटेड प्लानिंग बोर्ड्स. तो स्टेट्स में जिस तरह से सेंटर्स में पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, फॉर स्टेट्स स्टिल वी हैव प्लानिंग बोर्ड्स, राइट, विच इंश्योर to give basically their insights in the policy formulation for the government, right? तो अब इसे हटा करके जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में नीति आयोग लाई गई है, उसी तरह से स्टेट में भी स्टेट की अपनी एक थिंक टैंक होगी जो गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, right? So the vision is to ensure that the faster and inclusive economic growth at national level of becoming developed nation by 2047. So it is very important that for the entire basket of success, the state has to play a very significant and critical role, right? So the development of state is essentially important if you want to achieve the overall development by 2047, which will be marking a century complete 100 year of our independence. तो सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव की, किस तरह से गवर्नमेंट ने क्या इन्विसाइज किया है और किस तरह से इसके एडवांटेज होंगे. So the NITI Aayog gestures in recognizing the fact that कुछ सेक्टर्स की अगर बात करें, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं लाइक डिफेंस, रेलवे एंड हाईवे. द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इज एन एग्रीगेट ऑफ द स्टेट ग्रोथ, राइट. सो अकॉर्डिंगली स्टेट की भी जो ग्रोथ है, इट्स एग्रीगेशन ऑफ द ग्रोथ एंड दीज ग्रोथ आर समथिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशन डेवलपमेंट. हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किलिंग आर प्राइमरली विद द स्टेट गवर्नमेंट. ये स्टेट सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट्स काम करती है. NITI Aayog notes that the state government role is critical for improving the ease of doing business, land reform, infrastructure development, credit flow and urbanization, and these are some of the vital issues for sustained economic growth. तो किसी भी डेवलपमेंट की अगर बात करें, किसी कंट्री की सस्टेन ग्रोथ चाहिए, तो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल डेफिनेटली रिक्वायर इन इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, land reform, infrastructure, credit flow and urbanization. Now, what is Vision 2047? This was actually envisaged by the Prime Minister himself. In the recent Independence Day speech, the Prime Minister has categorically noted that they need to have an ambition which set for India's development and complete nation development by 2047. So NITI Aayog has already initiated
स्टेट सपोर्ट मिशन, जिसको SSM भी कहते हैं, स्टेट सपोर्ट मिशन, by holding the meeting of the state planning secretaries recently, which was held in September 8, I guess. Now, the think tank, which is likely to extend support to the states, including the expert from the IIM, IITs, और उनके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होंगे वो स्टेट्स में काफ़ी हेल्प करेंगे. जो फीडबैक्स मिलेंगे IIT और IIM जैसे संस्थानों के प्रोफेसर से या फिर जो टीम लीड्स होंगे उनकी तरफ से, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग द स्टेट गवर्नमेंट. Now, initially, the aim is for 8 to 10 states to set up such bodies जो कि by March 2023 तक फंक्शन करेंगे. तो अभी इनिशियली 4 स्टेट्स आइडेंटिफाई की गई हैं. दैट स्टेट्स इंक्लूड कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आसाम, दैट विल हैव दिस फंक्शन. एंड आफ्टर विच द महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात will likely to follow this suit. Now, the institution like that will be parallel or synonymous to the NITI Aayog. So, state में से state institutions for transformation कहेंगे. In short, you can call it SIT, right? In states, it will be called as SIT. And a plan has been chalked out by the NITI Aayog to help the creation of the team that will examine the existing structure of state planning board. अभी जिस तरह से state planning boards होती हैं जो कि government को help करती है function में. Now, this will be replaced by SIT, that is the State Institution of Transformation. So this is again very important for you, specifically mains और prelims में भी direct सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, right? So the lateral entry of professional will be encouraged in the SIT. खास करके जो expert है lateral entry की मतलब ये होती है कि जो प्रोफेशनल हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको भी एंट्री दी जाएगी ताकि वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अपनी रिकमेंडेशंस दे पाए. Now, beside the orientation, the state board as a SIT have a blueprint which will be working on some of the important areas. First, they will guide on the state on the policy formulation because उनका main purpose ये होगा कि वो recommendations दें और guide करें state government को. Taking up monitoring and evaluating the government policies and program. This is the second most important priority. And last but not the least is suggest better technology or model for the delivery of scheme. All the welfare schemes that will be envisaged by the government, किस तरह से उसकी delivery जो एक end basically citizen तक जो grassroots जो level है वहाँ तक पहुँचाई जा सके. Now that the news, India raised Sri Lanka Tamil issue in UN. This is again something very important for General Studies paper 2. That is bilateral regional grouping and agreement involving India's and affecting India's interest. Although this is important for the same paper in General Studies paper 2 where India and its neighborhood relation is concerned. So recently during the 51st session of the Human Rights Council, India has voiced its concern over the lack of measurable progress that Sri Lanka has committed for the political solutions to the Tamil issue or ethnic issues of Tamil. This is a long pending issue, although the ground reality is that Sri Lanka has been witnessing the worst economic crisis. और जिस तरह से अभी बेसिकली पूरी तरह से वहाँ के सिस्टम क्रैकडाउन हुई है उसके बाद अब रिवाइवल शुरू हुई है. तो इंडिया ये चाहती है कि जो इश्यूज़ हैं जो कि लॉन्ग पेंडिंग है, 13 अमेंडमेंट के बाद से ये बातें भी बहुत ज़्यादा जिक्र में आई थी कि क्यों नहीं अभी तक सॉल्यूशन दी गई है. सो देयर आर मेनी थिंग अलाइन टू दिस एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन मेंस एग्जामिनेशन. तमिल इश्यूज ऑल्दो दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल बट आपके ओपिनियन किसी ना किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं. Now, UNHRC official said that Sri Lanka should improve the human right and strengthen the institutions to tackle the humanitarian challenges that have sprung from its worst financial crisis for the 7 decade, right? So this is not something which has been recently formulated or the problem has been created. This is a long pending issue from 7 decades. Since 7 decades, this crisis has not been given a solution. Now, India की क्या stand रही है specifically अगर बात करें, India said that it always believe in the responsibility of the state by states, I mean Sri Lanka की बात की जा रही है, for promotions and protections of the human right and constructive international dialogue और cooperations की बात की गई है, which is a guiding factor in the UN Charter. So India said जो UN Charter में जो basic charters कहती हैं उसे भी implement नहीं किया श्रीलंका ने, right? In this regard, Indian delegation noted that with concern and the lack of the measurable progress by the government of Sri Lanka and their commitment to the political solutions to the ethnic group, by ethnic group I mean Tamil, this is the Tamil group which India is concerned, so through the full
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 13 अमेंडमेंट। जो 13 अमेंडमेंट वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस में की गई, उसके बाद कहा गया था कि इनको रिकॉग्निशंस मिलेगी जो कि नहीं मिली है। एंड इवन द पावर ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, वहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल होती है, एज होल्डिंग द प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन एट द अर्लीस्ट. So this is something, these issues were long pending and even the test of patience were there from Indian side. Now finally, India has made its stand clear in the UN that definitely the protection should be provided by the Sri Lankan government to the Tamil people. Now, earlier to this, India has also voted thrice in the favor of United Nations resolution of Sri Lanka on two critical issues and one on abstain twice for 2014 and 2021. Irrespective of its vote, India has consistently underscored the need for political settlement within the framework of United Sri Lanka and ensure that a justice, peace, equality, and dignity of Tamil will be provided in Sri Lanka, which is definitely for a long period of time, even for 7 decades, has not been fulfilled. The promise has not yet been made. The commitment which was there from the Sri Lankan side has not been finally done. तो इस बात को देखते हुए इंडिया ने कंसर्न रेज की. Now, Sri Lanka की क्या response है? The Sri Lankan government has refrained from committing the implementation of the constitutional amendment. By constitutional amendment, I mean जो 30th constitutional amendment हुई थी वहाँ पे, उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ. The starting that they will no go against the basically जो खास करके वहाँ के एक ethnic group है, singular majority, not ethnic, they are the majorities people. तो उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते हैं while working for solutions to the Tamil population. So again, there's a clash of interest which is there. And in terms of Sri Lanka, 9th provincial council expired about 3 years ago and they have remained defunct since. तो उसके बाद से इसकी जो functioning है, जो elections हैं, वो नहीं किए गए, which is again a cause of concern. Now, India's assistance to Sri Lanka, this is evident, and India has already been a proactive contributor. अगर बात करें इंडिया की सपोर्ट की, अभी जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, इंडिया ने अपने सपोर्ट एक्सटेंड किए, $4 बिलियन तक की असिस्टेंस दी है श्रीलंका को, एंड इट हैज नॉट मेड एनी रिमार्क ऑन पब्लिक दैट वी हैव सपोर्टेड श्रीलंका. So this is what India has done. Basically, India, whenever India favors neighbor countries, खास करके neighborhood fund policies के through, India is vocal about this part that we favors the neighborhood first policy, right? तो NFP के through जो काम की गई उसके बारे में इंडिया ने कहीं जिक्र नहीं किया कि हमने आपकी हेल्प की है. But still, India said that Sri Lanka's currently economic crisis demonstrated the limitation of the debt-driven economy and impact has been standard of living, right? So China, Japan, and India and Sri Lanka, there are 3 main bilateral creditors. अगर बात करें श्रीलंका की 3 मेजर क्रेडिटर्स की बात करें तो कंट्रीज हैं चाइना, जापान और इंडिया. ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्रेडिट दी हुई है. उसके बाद जो लार्ज चंक ऑफ फॉरेन डेप्ट है वो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू आती है जो वहाँ के होल्डर्स हैं. बेसिकली जो ISB के होल्डर्स हैं, दे आर ऑल्सो द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी देयर ओवर. तो अपार्ट फ्रॉम द लोन दैट वाज गिवन बाय द बायलैटरल क्रेडिट जो गिवन है चाइना, जापान और श्रीलंका के अलावा, तो ये जो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. Moving to the other news, Center asks state to implement adaptation rule. Something important for General Studies paper 2, that is welfare schemes for the vulnerable section of the population by the center and the states. So the Ministry of Women and Child Development has written to the state government asking to immediately implement the revised adaptations rules. That was the order that will be passed by the district magistrate instead of the court. तो ये कैसे रूल पास की गई है अमेंडमेंट करके. नाउ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो एम्पावर होंगे इस तरह के खास करके जो एडप्टेशन पॉलिसीज हैं उनके वर्डिक्ट्स को डिसाइड करने में. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द अमेंडमेंट टू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड अमेंडमेंट एक्ट दैट एम्पावर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. जो DMs होंगे और जो एडिशनल DM होंगे उनको एम्पावर की गई है इस तरह के चीज़ों में डिसीजन लेने के लिए. अकॉर्डिंगली जितने भी केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को. तो इसके लेकर के जो डायरेक्शंस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से सारे चीफ सेक्रेटरीज को दी गई हैं कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को DM को डायरेक्ट करेंगे ये केसेस को फॉलोअप करना स्टार्ट करें. ना जुवेनाइल जस्टिस केयर अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें, पार्लियामेंट ने पास किया था इसे, जो पुरानी एक्ट थी 2005-15 को उसको रिप्लेस किया. एंड इट हैज़ ऑथोराइज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इशूज एडॉप्टेशन orders under section 61 of the Juvenile Justice Act by striking down the word court. तो court word को रिप्लेस कर दी गई है
Now the DM and ADM will be responsible. तो ये एक single most important point है जो कि आप मेंस में यूज कर पाएंगे. Now, this was done to ensure that the speedy disposal of the cases are there, and the amendment of the Juvenile Justice Mode 2016 were notified in September 1st and require all adoption case to be transferred to the DM with immediate effect. तो जल्द से जल्द बेसिकली सारे स्टेट गवर्नमेंट को उनके रिस्पॉन्सिबल चीफ सेक्रेटरीज की थ्रू डायरेक्शंस दे दी गई हैं एंड वेरी सून द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस विल स्टार्ट. Now, concern raised over the jurisdiction of DM, instructions जो दी गई हैं उसमें कुछ concerns भी raise की गई हैं with regards to the civil matters such as inheritance succession as well as the likely delays that is caused due to the court that has passed the order on September 1st, passing them shortly, that is several month proceeding. तो again जो pass की जाएगी district administration को तो उसके जो basically जो nuances हैं वो भी address करनी होगी and the district administration has to look into each and every aspect before they come into the judgment. So the Ministry of Child and Development has wrote the chief secretaries of the state and union territories that all cases pertaining to the adoption matter before the court shall be transferred to the district magistrate, and the date of commencement rule is from 1st of September 2022. Now BDS course to be revamped with semester-based system, something relevant for General Studies Paper 2. Issues related to development and management of education and human resources. So the Dental Council of India has decided to overhaul the BDS courses in semester-based curriculum system. जो भी BDS के courses थी, Bachelor of Dental Sciences की, वो अब curriculum system पे पढ़ाई जाएंगे. Semester-based system है, उनको implement किया जाएगा. This is for the first time in 74th year that the Bachelor of Dental Surgery जो curriculum है, that will be set for the revamping. This is a gap of after 74 years since independence. This is for the first time पूरी curriculum में changes की गई. Now the aim of the decision, the Dental Council of India aims at bringing that the undergraduate courses are par with the global standard, जहाँ पे more job oriented course को बनाया जाए. And at present BDS is basically 5.5 year degree, right? 5.5 year की degree है. This is supplemented by 1 year of इंटर्नशिप. तो 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट करके ये जो पूरी 6.5 ईयर की डिग्री होती है, राइट. ना पोस्ट क्रेडिट बेस्ड करिकुलम है. यहाँ पे बेसिकली जो पूरे सिस्टम है जो करिकुलम डिजाइन की गई है, 5 ईयर ऑफ द कोर्सेज एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप विल बी देयर, राइट. एंड द एग्जाम विल बी शिफ्ट फ्रॉम नियरली टू सेमेस्टर सिस्टम विद द स्टूडेंट, जहाँ पे 50 to 60 इलेक्टिव सब्जेक्ट उनको सेलेक्ट करने होंगे. And this subject includes subject from Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha medicines, yoga science, dental sciences, implantology, laser dentistry, sports dentistry, 3D planning and orthopedics, and among other sciences. The student will have at least 9 electives. एक semester में at least 9 electives उनके पास होने चाहिए और each electives carries 2 credits. So वो curriculum में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए. अगर आपसे पूछा जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज या डेंटल साइंस के एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए प्रपोज, यू कैन डेफिनेटली कोड ऑल दिस थिंग्स. नाउ इंश्योरिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड, दिस इज टू इंश्योर कि जिस तरह से ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो इंडिया में भी इंप्लीमेंट हो. सो द BDS कोर्सेज दैट इज द बैचलर इन डेंटल सर्जरी विद द सेमेस्टर बेस्ड करिकुलम एम टू मेंटेन द BDS अंडरग्रेजुएट द पार विद द एग्जिस्टिंग, दैट इज ग्लोबल changing global standard, improving the quality of dental care across the nation, and educating dentists about a dynamic ethical problem that is arising in this field. The proposed curriculum will be brought as an early next academic year. So from next year only, the implementation process will start. And apart from the mandatory 9 elective, university can create an additional elective of categories on the changing needs of the society, and feedback will be given accordingly to the stakeholders and academic council. So this is upon the institutions how the implementation process will go. Now the news, that is efforts on to curb the lumpy skin diseases, something relevant for General Studies Paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from its design and implementations. So recently, the inauguration of International Dairy Federation was there, right? And this meeting is again very important because this has helped after a gap of 48 years. तो ये meeting 48 years के gap के बाद हो रही है, जो कि काफ़ी critical है. Prime Minister ने basically address किया इस meeting को, and he said that India is doing its all best possible efforts where we have developed a vaccines
टू बेसिकली जो लंपी स्किन डिजीज है उसको लेकर। So the World Dairy Summit was held in India after a gap of 48 years. The venue became very important for many other competitive examination as well. The last summit was organized in 1974 in New Delhi itself, right? And India is committed to have 100% of vaccination of the livestock, right? जो फूट एंड माउथ टीथ के डिजीजेज हैं तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ये 2025 तक ये सारी चीज़ों को क्लियर कर ली जाए. सो दिस इज व्हाट इंडिया is looking forward with, that the vaccination process for all the livestock for the diseases like lumpy skin diseases, जो कि is a part of basically an important program जो foot and mouth disease है उसको लेकर के जो vaccination process है वो 2025 तक complete हो जाए. Now, indigenous vaccines की अगर बात करें, lumpy pro-vac vaccine, this is jointly developed by ICAR, by the National Institute Center of Equine, जो कि हिसार में बेस्ड है हरियाणा में, और Indian Veterinary Research Institute, Ijjatnagar, Uttar Pradesh. They have developed a live attenuated vaccines that will be used against tuberculosis as well, measles also, mumps and rubella. तो इसके अलावे जो खास करके लंपी वैक्सीन डिजीज हैं उनमें ये सारे डिजीज को भी कवर किया जाएगा इस वैक्सीन के थ्रू. The Indian Council for Agriculture Research has recently commercialized the Indianization development of lumpy proact vaccines against the lumpy skin diseases virus affecting cattle within 45 months. The heterologous vaccine offering only across like the cattle lumpy skin diseases LSD के against. According to the official data, the lumpy skin disease है that has been infected more than 11.21 lakh cattle और जिसमें 49,628 almost close to 50,000 cattle that has been reported. Yesterday also I have discussed this news in detail. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें. लंपी डिजीज के बारे में और कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगी और किस स्टेट्स में किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इन्फेक्शन रेट की, दैट आई हैव आल्सो डिस्कस. आई एम नॉट कंटिन्यूइंग द सेम इन दिस वीडियो. नाउ इंडियाज डेयरी सेक्टर की अगर बात करें, इनिशियली इट वाज इनिशिएटेड वे बैक इन 1970 जहाँ पे ऑपरेशन फ्लड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया आज के डेट में है. एंड द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर 2018 वाज 290 grams per day against the average 302. And today, with annual production of 187.75 million ton, India accounts for 22% of the world milk production. This is again an important point that you can use in mains examination. And as compared to the 2% of production growth at the global level, it is expected that India will soon reach the percentage of 6%. So this will be again a milestone achievement for a country like India. नाउ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो IDF है उसके बारे में थोड़ा बेसिक्स आपके लिए जानना जरूरी है बिकॉज दिस विल बी रेलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इवन फॉर मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. व्हाट इज बेसिकली IDF? So IDF, that is International Dairy Federation, is a leading source of scientific technical expertise and all the stakeholders of dairy chain. Since 1903, IDF was a network of dairy experts that has provided a mechanism of dairy sector to reach global consensus on how to help feed the world and safe and sustainable dairy products. IDF strengthened in building consensus, working together, and dairy standard that has grounded in science to enhance the trust in the dairy productions. Now, International Dairy Federation is based in basically Brussels in Belgium. तो headquarters कहाँ पे हैं ये भी काफी important point. Now, moving to the editorial of the day, that is great G20 power comes with great responsibility. Something important for general studies paper 2, that is important international institution agencies, their structure and mandate. So the theme of this editorial is India's G20 presidency roadmap. और अगर बात करें इस editorial की सब heading की, I'll be simplifying this editorial with this important subheads, which is presidency of G20, setting of G20 agenda, sustainable and inclusive growth, lesson from Indonesia presidency, significance of hosting G20 summit and the way forward. So Prime Minister of India is scheduled to attend the meeting of the Council of Head for the Shanghai Cooperation Organization, जो कि सामर्थ्यखंड उज्बेकिस्तान में होने वाली है. This name is again important. The 15 September 15 to 16, 2022. This is a date by which the meeting is going to happen. This will be the first in-person meeting of the SU because of the COVID-19 pandemic. There was no in-person meeting was scheduled.
Now, this will be also for the first time that the Prime Minister of India will be meeting the Chinese President since the face-off that we have seen in the LAC, that is the line of actual control, Ladakh के region में जिस तरह से हुई है, अभी de-escalation process start हुई है, but again the desired expectation from India that was expected from China has not been yet met. तो देखना होगा और इसमें कितनी ज़्यादा progress होती है इस meeting के बाद. Now, the government of India has said that India and China will be taking up the remaining issues of LAC with the disengagement at patrolling point 50 and Gorga hot spring, which is completed, right? So definitely positive gestures had been shown by Chinese, but we want some more results. Presidency of G20 की अगर बात करें, India will assume the presidency on the rotational basis. तो SCO की जो मीटिंग है, ये मीटिंग जो एंड होगी उसके बाद प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास होगी G20 की, and India will assume the presidency of G20 by December 1st 2022 and November 23. तो जिस ये खास करके SCO की मीटिंग खत्म होने के बाद इंडिया तुरंत ही G20 की प्रेसिडेंटशिप को हैंडल करेगा. Now India will host the SCO summit next year and it will also preside as a president of the United Nations Security Council for December 2022. So these all important forum जिसमें इंडिया की important lead role है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Setting the G20 agenda, how India will be setting their agenda. So India can find a common agenda on the ground of G20 by addressing the global issues. कुछ ऐसे issues जो global concern के हैं उसको address करते हुए इंडिया अपने जो पूरी stand उसको clear कर सकता है. So India need to promote its specific priority. कुछ important issues की अगर बात करें जो regional issues भी होंगे, domestic issues भी होंगे, that include economic recovery, trade, investment, unemployment, patent waivers, diagnostic, therapeutics, vaccines and COVID-19 वैक्सीन एंड टेररिज्म, बिकॉज कोवैक्स प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस अभी तक पूरी नहीं की. मोर स्पेसिफिकली इंडिया कुड बी फोर्ज ग्रेट कॉपरेशंस विद G20 सच एज यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा, देयरबाय एक्सेलरेटिंग द कोऑर्डिनेशन इन रियलाइजिंग द FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा बातें होने वाली है. सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है. सो इंडिया विल डेफिनेटली कॉल फॉर अ रोड मैप वेयर द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ road map will be there. So first, call for quick and global economic recovery, focusing on the supply chain and resilience mechanism, stressing on the green and clean transformation in economy and impact on the societal well-being. This would ensure a sustainable and inclusive growth for the global economy. लेसन हमें लर्न करने की ज़रूरत है इंडोनेशिया के साथ. Basically, to begin with, India can take clues from Indonesia's presidency to observe how it has managed the deeply divided various issues. तो कुछ important lessons जो हम learn कर सकते हैं इंडोनेशिया से, उसके कुछ key pillars हैं global health architectures, sustainable energy transitions और digital transformation. Make sure if you're writing in mains paper, आप इन चीज़ों को ज़रूर include करें, the lesson learned from presidency of Indonesia. Now, significance of hosting G20 summit. By hosting the summit of G20, the world most influential economic multilateral forum, that is India, will have an opportunity to assume the center stage in proposing and setting the global agenda and discourse. एक बहुत ही important एक रोड मैप, एक स्टेज है जहाँ पे इंडिया प्रेसिडेंट सेट कर सकती है. And G20 hold a strategic role in securing the global economic growth. Together, its members represent almost 80% of the world GDP and 75% of international trade and 60% of world population. This is single most important point in the slide. Make sure you can take a note of this, important for prelims and mains examination. Now it is argued that most high profile event will be hosted by India next year. Now way forward की अगर बात करें, India's G20 presidency would place India at the global stage and provide opportunity for India to place its priorities and narrative on the global agenda. And G20 is a unique global institutions where the developed countries, basically अगर बात करें, where the developed and developing countries will have an equal stature, and definitely India will provide opportunity to each member countries to address their grievances and help them out to overcome the problem and even promote the roadmap for sustainable growth for our entire country and even for the entire world. Now, moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday's questions. For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is C again. Today's MCQ for practice, आपको बताना है making peace with nature
has been recently published by United Nations Environment Programme, IPCC, Food and Agriculture Organization, World Wildlife Fund for Nature. So which among the following is the correct option? You have to check that. Second, vertical launch short range surface to air missile is an indigenous design and developed missile developed by DRDO. It is capable of neutralizing aerial threat at close range, including the sea skimming targets. So do check it out for the correct option. This type of question is again very relevant. और साइंस एंड टेक की अगर बात करें, साइंस एंड टेक पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मिसाइल सिस्टम्स पे या जो भी एडवांसमेंट हो रही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर सरफेस टू एयर मिसाइल और एनी काइंड ऑफ मिसाइल सिस्टम दैट इंडिया हैज लॉन्च्ड. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I will more be happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.